वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद के आर डेली मार्केट एनालिसिस। और आज हम लोग चालू करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के साथ एज वी डू नॉर्मली। एंड हियर वी हैव द प्राइस ऑब्वियसली डाउन अराउंड 1%। और बेरिश एंगल्फिंग जैसा है। नाउ जनरली बेरिश एंगल्फिंग इज कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न, अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, जब ट्रेंड एक्चुअली ऊपर होता है और बेरिश एंगल्फिंग आता है और वहां से नीचे जाता है। नाउ हियर obviously I think it is a little too early to talk about whether this is actually a reversal pattern or not. पर हाँ, एक एक डेफिनेटली हम लोग एक वो चीज तो बात कर सकते हैं कि दिस इज डेफिनेटली showing that the sellers were in control at least for the day. ये जो बिलीफ है वो फर्दर री होगी अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, पर वो हम लोग 2 मिनट में जाएंगे। सो नाउ एटलीस्ट ऑन द डेली चार्ट, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट्स देयर 20 MA, जो जो हम लोग ने ये डोजी के दिन भी बात किया था, 20 MA वो अब तक होल्ड कर रहा है, विच इज अ गुड साइन, राइट? सो बेसिकली अंटिल 17600 इज हेल्ड, आई थिंक जो इनिशियल बुलिश ट्रेंड है, एटलीस्ट the euphoric trend that has been seen, that should at least be held based on the 20 MA itself. नाउ अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं, मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ, नॉट द आर्ली चार्ट दिस टाइम। एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट हाइड द मूविंग एवरेजेस। और हम लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि सेलर्स कंट्रोल में क्यों थे। तो यहाँ पे वी कैन सी आफ्टर प्रीटी मच 12 noon इट्स बीन अ स्ट्रेट डाउन राइट फ्रॉम 880 टू 620। सो काफ़ी बड़ा, मतलब ऐसा डिप हम लोग बोल सकते हैं। एंड इफ वी कंपेयर इट टू येस्टरडेज प्राइस मूवमेंट, अभी येस्टरडे क्या हुआ था, कल क्या हुआ था कि गैप अप खुला था, आया नीचे, रीटेस्ट किया, पॉसिबली अराउंड 78.6 से लेके 61.8 लेवल के बीच में ही होगा ये फिब का, एंड देन इट वेंट अप। टुडे व्हाट वी सॉ इज अ माइनर गैप अप, नीचे आया, रीटेस्ट किया, प्रीवियस क्लोज को थोड़ा ऊपर किया, जो डेज हाई था उसको रीटेस्ट करने का अटेम्प्ट था, एंड देन इट जस्ट वेंट डाउन। नाउ दिस डाउन मूव दैट वी सी इज राइट अराउंड हियर, राइट राइट अराउंड हियर। सो ये वाला जो गैप है, दैट इज आई थिंक द रियल की टू वेदर निफ्टी मे सस्टेन हायर लेवल्स और नॉट। क्योंकि ऑब्वियसली आज के सेकेंड हाफ का जो सेलिंग था वो काफी इंटेंस था, राइट? इट वाज सीन इन सेवरल स्टॉक्स, नॉट जस्ट विथ निफ्टी और नॉट जस्ट विद अ फ्यू स्टॉक्स। काफी स्टॉक्स में हम लोग ने देखा कि थोड़ा सेलिंग आया था। I think buyers, the bulls also made a few attempts. We can see these candles here, which are fairly bullish, right? Especially this one, which is like a hammer pattern, pretty bullish. But then वो भी hold नहीं कर पाया ये वाले level पे, right? So 700 का level तोड़ दिया उसने. So वैसे करके that's my basis of saying that the sellers were possibly in control at least for today. Now, what this means in terms of the broader trend, firstly, I'm not sure if my internet is working properly or not. But फिलहाल तो हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग सिंपली ये लो ले, 330 का लो ले, then we could just construct a retracement, and then we can see it's right around the 50% mark. 50% mark से नीचे most of the times 61.8 तक जा सकता है। और उधर से अगर हम लोग कुछ bullish reversal pattern भी देखते हैं, then there is a chance that we do see it coming up. So let's see. As of now, I think the key level here is first 600 and then 560-ish, जो ये gap filling करेगा वो। तो देखते हैं कैसा जाता है। नेक्स्ट अप वी आर लुकिंग एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट कर लूँ मूविंग एवरेजेस के साथ, I'll just hide the drawings for now. We can see Bank Nifty is also still at the 20 moving average, which is fair sign. I think it still shows a reasonable amount of bullishness as long as it's above 20 MA. Same Nifty का जो बात किया वो. However, we can see कि Bank Nifty actually all time high attempt करने वाला था. It was just a few points away. And the high for the day was actually 38,100. ATH जो है 38,377 है, so 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए is really not that much. But it obviously failed. In that respect, Bank Nifty failed more spectacularly than Nifty, क्योंकि निफ्टी तो उतना ऊपर गया नहीं था, बैंक निफ्टी तो ऊपर जाके नीचे आया है। Now if we do see it on a 15-minute time frame, हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी के जैसे ही जो प्रीवियस कैंडल्स के जो ये वाला जो लो जैसा था, बेस जैसा फॉर्म किया था, नॉट कंसिडरिंग दिस डे, उधर पे ही आ गया है, विच मीन्स दिस इज एक्चुअली अ वेरी की जोन। सो अगर ये होल्ड करता है देन दैट्स ऑब्वियसली अ गुड साइन, राइट? दिस इज अ बुलिश साइन।
अगर वो तोड़ता है तो पॉसिबली ये वाले जो लेवल्स थे हम लोगों ने जो देखे थे 37,000 के आसपास, वो रीटेस्ट हो सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज फ्रॉम हियर I'd possibly be looking at first 37,700, 650 के आसपास, and then we're looking at this level right under 38,000, और उसके बाद आता है आज का हाई. Today's high we can see is right around here itself. So देखते हैं. Rather interesting close for Bank Nifty. I'd say यहाँ पे I don't think fib retracements will be very useful. Now, instead of talking about the top stocks, I'll first talk about a few stocks that I was looking at today, and this is all from this list. So, avenues of investment is actually UR's account. UR जिन्होंने कल analysis की थी, who's my father. So वो ये account आप देख सकते हो, avenues of investment, और he posts swing trades every week. So out of that, I thought two were rather interesting. One is Tata Consumer. Tata Consumer टाटा कंज्यूमर, इफ़ यू रिकॉल, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग दीज वीडियोस फॉर सम टाइम, आपको शायद याद होगा कि हम लोग ने पहले भी बात किया था, क्योंकि ये पैटर्न फॉर्म कर रहा था. ये पैटर्न फॉर्म करके ब्रेकआउट पे हम लोग ने बात किया था टाटा कंज्यूमर के, एंड देन इट सॉ प्रिटी गुड मूव. सो इफ वी वुड हैव बॉट ऑन दिस कैंडल, अबव द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, इट वाज अबाउट एन 18% जर्नी ऑन द अपसाइड. अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बना था, ये जो रेजिस्टेंस जोन जैसा था 780 के आसपास, वही जोन में वापस एंटर करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो स्विंग लो जो इसने बनाया था ये वाले में, वो था 796. सो आई बी लुकिंग आउट एट दिस एज वेल. अगर जूम आउट करके देखे तो कुछ ऐसा दिखता है. सो आई थिंक इट्स अ रादर इंटरेस्टिंग सेटअप. अनदर स्टॉक दैट आई वाज लुकिंग एट इज बंधन बैंक. बंधन बैंक में मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इट रिस्पेक्टेड द फिब लेवल रादर वेल. सो दिस इज वॉट वी वर सीइंग अर्लियर. ठीक है, ये 0, ये 100, ये वाला, और हम लोग देख सकते हैं कि 38.2 के लेवल से, आई वंडर इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड, 38.2 के लेवल से बाउंस किया था, एंड दिस इज अप्रॉक्सिमेटली वेयर वी हैड स्पोकन अबाउट इट. नाउ इट्स अप अराउंड 13%, विच इज प्रीटी गुड, राइट? Especially on a day where so many other banks are actually down. बैंकिंग सेक्टर भी हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर भी हम लोग देख सकते हैं. PSU बैंक्स 2% डाउन, प्राइवेट बैंक्स 0.5% डाउन. Bandhan Bank meanwhile is up 2.5%. So clearly there's a good sign, right? At least in my view. So those are two stocks I thought I'd talk about. And since we are talking about sectors, we'll jump to the sectors. We can see metals are actually down today, quite weak, along with PSU banks, healthcare also. Presumably pharma bhi weak hoga because healthcare is also down. And banks were actually relatively stable compared to the other market, but hum log ne dekha banks have actually come down from higher levels. So that is how they came down. Now if you look at the broad market hum log ko kya dikhata hai? VIX ऊपर है 5%. But apart from that, all of the other markets are down. जो indices है, most of them are down around 1%. आज के gainers and losers में this is the list. So we can see at least two consumer companies, Tata Consumer, Britannia, FMCG companies. And in the top losers list, we can see a few steel companies. Coal India है, ports भी है. देखते हैं क्या होता है. And now I'll come to the top stocks. So top stocks, फटाफट से we'll just talk about them. Starting things off with Reliance. ठीक है, starting things off with Reliance. Just a quick little wrap up here. Reliance, we can see high levels were rejected. 2600 को तोड़ दिया है, नीचे आ गया है. 2580 भी तोड़ दिया है. I don't think it's a very bad sign. This is to be expected, at least at higher levels, especially on a day जब market काफी selling pressure से गुजर रहा था. So it's down around 1.9%. Next up is HDFC Bank. If the chart just loads, it's taking a long time. HDFC Bank is up 1.2%, which is good to see. Possibly one of the few stocks that is actually holding Nifty together. वरना I can't imagine Nifty और Bank Nifty का क्या हालत होता अगर HDFC Bank नीचे गया होता तो. It is in fact raining, in case you were wondering. Infosys is up next. Now it has rejected the higher zone of the 50 and 20 MAs, but वो 1670 के ही zone में है जहाँ पे उसने previously consolidate किया है. In fact, this is actually one of the levels where I have purchased at. Next up is HDFC 50 MA trade. Not much to talk about here, to be honest. High इससे काफी नीचे आया है. Intraday chart काफी interesting होगा मेरे हिसाब से. देखना है तो देख सकते हो. ICICI Bank, one of the stocks that really possibly had an impact on Nifty एंड बैंक निफ्टी. रीजन आई से दिस इज बिकॉज इंट्राडे चार्ट देखते तो हम लोग को पता चलेगा कि इतना ऊपर गया था, उसके बाद शार्प नीचे, जितना ऊपर गया उससे डबल नीचे आ गया, विच इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू सी, स्पेशली
टॉप स्टॉक, क्योंकि वो मार्केट को काफ़ी हिला सकता है. नेक्स्ट अप कोटक बैंक, वी कैन सी क्लोजिंग 1955 और 20 MA के नीचे है. Not necessarily a bad thing, I'd say, in Kotak's case, because Kotak is known to not always respect the moving averages, especially ये सब चीज़ों में. So यहाँ पे हम लोग ने रफ देखा है कि रफली भाव दिया था उसको, but overall it doesn't always. So I think it's not the most accurate signs. RSI 60 के नीचे आ गया है, which is possibly one thing to consider. Next up SBI, हम लोग देख सकते हैं कि उतना कुछ बोलने जैसा खास नहीं है. हम लोग देख सकते हैं ये रफ जो जनरल रेजिस्टेंस जोन था उससे नीचे आया है. Today it was actually the second highest level that we saw, 471, with the all-time high being 471.9. So very close to the ATH, yet obviously 1.5% down. Next up we've got Axis. हम लोग देख सकते हैं 780 के जोन में ही है, which is quite important, I'd say. देखते हैं कैसा जाता है. And yeah, let me know how your trading session was today. Overall, I think अगर जो जनरल बुलिशनेस जो हम लोग ने देखा था वो ऑब्वियसली थोड़ा कम पड़ गया आज के सेलर्स के हिसाब से, बट दिस ऑलवेज हैपेंस. आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग साइन ऑफ वरी और एनीथिंग, एटलीस्ट इफ यू नो यू आर अ बुल. Obviously bearish engulfing here, that does show some sort of weakness, but then again, all of these things happen. If we try to look for such candlestick patterns, तो हम लोग को ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो हम लोग को conflicting opinions देंगे और analysis देंगे. For example, this one right here, right, we're seeing an inverted hammer के बाद हम लोग ने देखा around 400 पॉइंट का रैली. ये वाला हम लोग ने देखा इट्स अ गुड बाइंग एट लोअर लेवल्स, बट देन वी सॉ इट dipping. So I don't think candlestick patterns, at least in this market, are holding that much value on the daily chart. Intraday पे होता है, नहीं भी होता है. So yeah, let me know how you feel. Let me know what you feel about the market. Curious to hear your feedback. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.